Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, dear students. Once again, I welcome you all on our online teaching platform. Today, we are going to see the new topic of chapter number 12, electricity. And today's topic, dear student, is resistance of a system of resistor. Now, what is resistance? That we have seen in our Ohm's law. The constant which is there in the Ohm's law formula, that constant is known as resistance. And what is the current is flowing through this circuit is in inverse proportion with this constant R. Okay? That means whenever the current is increased in the circuit, for that you are supposed to reduce the resistance in the circuit. And suppose if we increase the resistance in the circuit, the amount of current flowing through the circuit gets reduced. As both current and resistance are in inverse proportion to each other, that we have seen in our Ohm's law. Okay, so in short we can say that resistors are used to control the current flowing through the circuit. Whatever the amount of current is flowing through your circuit, that can be controlled by means of resistors. Now, what are the resistance we are using in our circuit? They are being connected in two different patterns, and those two patterns are series connection of resistor and parallel connection of resistor, and that we are going to learn one by one today. So let's start with the first pattern in which our resistors are in series. That means whatever the resistance we have used in our circuit, all those resistors are in series connection. So when you connect the resistors in series connection in your circuit, what type of current will flow, what type of voltage will be created across the 2 points in the circuit, that all we are going to learn in this topic now. Okay, so let's see to that. Let's start with the definition of series connection of resistor. See, whatever the resistance you are using in your circuit are said to be connected in series when the current flowing through each and every resistor is same, and the whatever the path is available in the circuit for the current to flow is one only. यानी स्टूडेंट, अगर आपके सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस रखे गए, अगर हर एक रेजिस्टेंस में से इक्वल करंट पास हो रहा है और करंट को सर्किट के एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है, एक ही रास्ता अवेलेबल है, सो इन दो कंडीशन को जब भी फुलफिल किया जाएगा, आपके रेजिस्टेंस के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोला जाएगा. So your resistors are said to be in series connection when the current flowing through each and every resistor is same and the path available for the current to flow from one end to the another end of the circuit is only one. Then such connection are said to be series connection. Now you can see in the diagram I also shown, suppose this is the point A and this is the point B. Now from this point A your current will start. You can see this is your current coming from the positive terminal of the battery, and this current is also known as conventional current, because I have told you in our last lecture we are having two type of current. One is conventional current, that which was discovered before the 19th century, and after 19th century when the discovery of electron was made, we have come with new current, that is current due to electron, which always start from negative terminal to the positive terminal. But for our convenience, we always represent the direction of current as conventional electric current, which start from positive terminal and goes towards the negative terminal. So this is the direction of your current. Now between these 2 point A and B, your current has to travel. To see, this is the only path. This is the only path which is available for the current to flow from this point A to this point B. And what are the resistors they are connected? What are the resistors? That is resistor R1, resistor R2 and resistor R3. All are in series connection. All are in continuous one straight connection. So it's a series connection. So whatever the current is flowing through this three resistor is same.
That means this I will equally pass through this resistor as well as through this resistor. That's why this is known as series connection. Okay, but when we do the series connection, our voltage gets divided. Because as per the resistance value, its voltage is going to be changed as per its resistance value. So whatever the voltage is there, R1, R2, R3, so all these voltage are going to be different from one another. That's why I have written V1, that is voltage of resistance R1, V2 is the voltage of resistor R2, and V3 is the voltage of resistance R3. So during the series connection, dear student, first of all your current is going to be same through each and every resistor, but your voltage is going to be divided. ठीक है, सीरीज कनेक्शन में करंट इक्वली फ्लो करता है, डिवाइड नहीं होता, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है. ठीक है, ये याद रखना है. इन सीरीज कनेक्शन करंट इज नॉट डिवाइडेड, इट रिमेन्स सेम, whereas voltage is get divided. ओके, सो अगर ऐसा है तो मुझे पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करना है. इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट, सो हाउ वी विल डू? जस्ट लाइक simple mathematics sum, that is total voltage V is the sum of each and every voltage drop across the each resistor. So my total voltage drop across the 2 point A and B in the circuit is going to be equal to sum of voltage drop across each and every resistor. यानी मेरे रेजिस्टर 3 है तो मेरे वोल्टेज ड्रॉप कितने होंगे? V1, V2, V3. तो इन जैसे इन तीनों को प्लस कर दूंगा, आई विल हैव माय फाइनल V, दैट इज वोल्टेज. ठीक है, फाइनल वोल्टेज ड्रॉप. ओके, नाउ सपोज अगर मैंने इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया किसी एक रेजिस्टेंस से, दैट इज R. Here R is known as equivalent resistors. Here R is known as equivalent resistance because this R has a value almost equal to sum of all these three. यानी तीनों R1, R2, R3 का जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू होगा उसके इक्विवेलेंट वैल्यू किसका होगा? इस R का. That's why R is known as equivalent resistance. जो हम इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह खाली इस अकेले R को रख सकते हैं. So that R is known as equivalent resistance. और उसको अगर हम अप्लाई करें ओम्स लॉ, तो उसका रेजिस्टेंस मतलब उसका वोल्टेज क्या होगा? V is equal to IR as per ओम्स लॉ. Okay, now according to Ohm's law, voltage drop is going to take place at this and this, all three resistors, which will be given by this three formula. That is voltage drop at resistor 1 is IR1, voltage drop at resistor 2 that is IR2, voltage drop at resistor 3 is IR3. Because our I is going to be same, whatever the voltage drop is taking place as per the resistance value. That's why V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. Okay, now put in this equation 2 for equivalent resistance and this equation 3 for all the individual resistance in equation number 1. जैसे मैं equation 2 और equation 3 की values को equation 1 में रख दूं, so equation 1 क्या है? V, so V means IR, लिख दिया मैंने IR, then V1 plus V2 plus V3, लेकिन V1 क्या है? IR1, so लिख दिया, plus V2 क्या है? IR2, लिख दिया, plus V3 क्या है? IR3, लिख दिया. So my final equation is IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. Now take out the I common, your I will get cancelled out. So what final equation you will get? You will get equivalent resistance R is equal to sum of resistance R1, R2 and R3. That means in series connection, dear student, whenever you do this series connection, your final resistance, your total resistance is the sum of individual resistance present in the circuit. ओके, आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा R यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, उसकी वैल्यू आपके सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टेंस को प्लस करने पे, सम करने पे मिलेगी. सो दैट इज ऑल अबाउट द सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर. नाउ लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर. ठीक है, अगर आप सीरीज कनेक्शन करोगे आपके सर्किट में तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो हम देखेंगे one by one. So starting with the characteristics, you can see the current flowing through each resistor is same. हमने जस्ट देखा कि जब भी आप सीरीज कनेक्शन करते हैं, so in series connection we are having only one path
for the current to travel. ठीक है, so naturally whatever the current is flowing through each and every resistor is going to be same. That's why the first point is written, the current flowing through each resistor is same. Now the total voltage drop across all the resistors is equal to the sum of voltage drop across each resistor. यानी this thing, इसकी बात कर रहा है कि अगर आपको पूरे सर्किट का टोटल वोल्टेज निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, बिकॉज जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं, व्हेन वी डू द सीरीज कनेक्शन वी नो दैट द वोल्टेज ड्रॉप एट एवरी रजिस्टर, द वोल्टेज ड्रॉप एट एवरी रजिस्टर इज गोइंग टू बी डिफरेंट. जैसे यहाँ करंट सेम था सीरीज कनेक्शन में, वोल्टेज सेम नहीं होता. क्यों? बिकॉज डिफरेंट रजिस्टर हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू. ठीक है, यहाँ जितने भी रेजिस्टेंस है सबकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है टू कंट्रोल द करंट वो अलग अलग है. तो जैसी उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू होगी वैसे उनका वोल्टेज ड्रॉप होगा. ठीक है, दैट्स व्हाई दी व्हाटएवर द रेजिस्टेंस यू आर यूजिंग इन सीरीज कनेक्शन वी आवर वोल्टेज इज गोइंग टू बी डिवाइडेड. Okay, so that final voltage can be calculated by taking the sum of all the voltage drop across each resistor. Okay, that is our second point. Now third, the magnitude of equivalent resistance is always greater than the largest resistance. यानी this thing, इस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, because आपका equivalent resistance R जो है, when you are going to get it, you are going to get it by the sum of R1 plus R2 plus R3. यानी जो फाइनल R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस that will come after the sum of R1 plus R2 plus R3. That means R will always have a greater value compared to these three resistors. यानी इन तीनों रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ी वैल्यू किसकी होगी? R की. Why? Because R को सम करके मिल रहा है. Because R कब मिलता है? जब हम तीनों रेजिस्टर को प्लस करेंगे. So obviously whatever the value for R is going to become, it's going to be very high or large compared to these three. That's why it is written what they have written, the magnitude of equivalent resistance R is always greater than the largest resistance. यानी तीनों रेजिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी उससे भी बड़ी वैल्यू किसकी होगी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की. Okay dear student, now let's see the merit. Merit यानी advantages. What are the advantages of doing this series connection in this circuit? So advantages में total resistance in this circuit can be increased by series connection of resistor and thus current can be controlled. आप सीरीज कनेक्शन करके आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज जितने रेजिस्टेंस यूज करोगे उतनी R की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होगी आपका करंट रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज एज पर ओम्स लॉ रेजिस्टेंस एंड करंट आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो अगर आप सीरीज कनेक्शन करते हो तो आपका टोटल R इंक्रीज हो जाएगा, योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी इंक्रीज, और जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा करंट उतना रिड्यूस हो जाएगा. सो अगर करंट रिड्यूस होगा तो कम करंट को कंट्रोल करना इजी होता है. सो बाय डूइंग द सीरीज कनेक्शन we can increase our total resistance and thus we can control the amount of current flowing through the circuit. Next, in domestic circuit the fuse is connected in series with AC mains as well as electric appliance. Therefore whenever the short circuit occurs the fuse wire man can stop the current. हमारे घर में जो भी हमारा जो मैन टॉरेंट का जो कनेक्शन है वह एक फ्यूज लगा होता है, and that fuse is in series connection with the main torrent power. ठीक है, मेन टॉरेंट पावर की जो मेन वायर होती है उसके साथ फ्यूज हमेशा सीरीज कनेक्शन में होता है. या हमारे घर में जितने भी अप्लायंस हैं जैसे टीवी है या जो भी है अप्लायंस है, आयरन है, ठीक है, घर में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसके अंदर भी एक फ्यूज होता है, एंड दैट फ्यूज इज ऑलवेज इन सीरीज कनेक्शन विद द अप्लायंस. व्हाई? बिकॉज़ व्हेनेवर द एक्सेस करंट कम, कभी-कभी हो जाता है ना कि ज्यादा करंट आ जाए, लोड ज्यादा आ जाए, सो ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा लोड ऑफ करंट व्हाटएवर द फ्यूज वायर इज देयर इट मेल्ट. ठीक है, वो मेल्ट हो जाती है, और जैसे मेल्ट होती है आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, और जैसे सर्किट ब्रेक होता है फिर करंट फ्लो करता नहीं है, और इफ योर करंट इज नॉट फ्लोइंग टू दिस सर्किट तो आपका जो भी अप्लायंस है, जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगी. सो दैट इज द रीजन. सीरीज कनेक्शन का ये दूसरा फायदा है कि अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो जो भी फ्यूज है इट इज ऑलवेज केप्ट इन सीरीज कनेक्शन. Why? Because when the extra current load comes, that fuse wire get melt and stop the current to from one end to the another, from going from one end
to the another, उसको stop कर देती है, and due to that our circuit breaks, and when circuit break whatever the damage is going to be done, ठीक है, that can be prevented. Okay, now let's see the demerits, ठीक है, नुकसान, disadvantages क्या है. So applied voltage is divided across each appliance, so they cannot work efficiently, they give dim light, ठीक है. अब क्या होता है कि when we do the series connection, we know that at each resistance my voltage is going to be drop, मेरा जो भी voltage है वो drop होने वाला है, and due to drop in voltage क्या होगा कि जो भी मेरे इलेक्ट्रिक अप्लायंस या गैजेट है घर में वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम नहीं कर सकते, they can't work to their full efficiency. Why? Suppose the I am getting, जैसे हमारे घर में टॉरेंट पावर से जो इलेक्ट्रिक पावर आती है कितनी आती है 240 वोल्ट, ठीक है, हमें जो करंट दिया जाता है उसका वोल्टेज कितना होता है 240 वोल्ट. आप घर के बाहर जो मीटर है ना उसमें देखना वहां 240 वोल्ट लिखा होगा, 220 से 240 वोल्ट, ठीक है. दिस मच वोल्टेज ऑफ करंट इज ऑलवेज कमिंग इनटू आवर हाउसेस, ठीक है. अब क्या होता है कि हमारे घर में जितनी भी अप्लायंस है अगर हम उनको मैं सीरीज कनेक्शन में डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा. सपोज मेरे पास 3 बल्ब्स है, ठीक है, और तीनों बल्ब की जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो 100 वोल्ट की है. कितने वोल्ट की है 100 वोल्ट की. लेकिन अगर मैंने तीनों इलेक्ट्रिक बल्ब को सीरीज कनेक्शन में लगा दिया तो क्या होगा, यहां से तो 240 आएगा लेकिन 243 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा. सो 240 डिवाइडेड बाय 3, हाउ मच वोल्टेज आई विल गेट फॉर ईच बल्ब इज 80 वोल्ट. मेरे हर एक बल्ब को कितना वोल्टेज मिलेगा 80, बिकॉज दोस 3 बल्ब आर इन सीरीज कनेक्शन. सो व्हाटएवर द वोल्टेज इज गोइंग टू बी देयर इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड. और जैसे वोल्टेज डिवाइड होगा इवन दो माय बल्ब इज ऑफ 100 वोल्ट कैपेसिटी लेकिन उसको कितना वोल्टेज मिलेगा 80 वोल्ट. सो इन सच केस वो जो ब्राइटनेस देगा, जो भी लाइट देगा वो कितने वोल्ट की देगा 80 वोल्ट की, ठीक है. वो किस तरह से काम करेगा 80 वोल्ट के हिसाब से काम करेगा, जबकि उसकी कैपेसिटी कितनी थी 100 वोल्ट की. So this is the disadvantages of series connection, dear students, कि your electrical appliance, your electrical gadgets can't work to their full efficiency. आपके गैजेट अपने वोल्टेज की जो एफिशिएंसी है उस लेवल तक काम नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जो लाइट है, उनकी जो ब्राइटनेस वो डीम हो जाती है ना. देखा होगा आपने, देखा होगा जब भी हम घर में एसी ऑन करते हैं तो घर की जो दूसरी लाइट्स है ना उनका वो क्या हो जाती है डीम हो जाती है. क्यों? बिकॉज वोल्टेज डिवाइड हो जाता है. तो एसी सारा वोल्टेज खींच लेता है तो बाकी गैजेट को वोल्टेज मिलता नहीं है. सो दे गेट डिम, सो उनकी लाइट डिम हो जाती है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन. एंड द नेक्स्ट इज इफ अ फॉल्ट occurs in one appliance or the circuit break, then the current does not flow in the circuit and hence all the appliances stop working. This is the most you can say the main disadvantage of this series connection, because in series connection what happen, one of whatever the electrical gadgets you have connected in series connection, in one of the gadget suppose the electric short occurs, वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक आ जाए, ठीक है. सो ड्यू टू दैट उसकी जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन उसकी सर्किट ब्रेक होने से क्या होगा, करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे नहीं आ सकता. देखो पहले सारे गैजेट एक दूसरे से सीरीजली कनेक्टेड थे, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इन वन ऑफ द गैजेट उनके बीच का जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, यानी बीच में गैप आ गया. और हमें पता है ना सीरीज कनेक्शन में करंट को ट्रैवल करने के लिए तो एक ही पाथ अवेलेबल है, और वो पाथ भी ब्रेक हो गया, सर्किट टूट गई. तो सर्किट टूट जाने की वजह से करंट अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ ही नहीं सकता, वो ट्रैवल कर ही नहीं पाएगा. और करंट ट्रैवल नहीं करेगा तो आपके सारे के सारे गैजेट जितने भी सीरीज कनेक्शन में है ऑल आर गोइंग टू बी स्टॉप, ठीक है, सारे के सारे बंद हो जाएंगे. यानी किसी एक गैजेट में डिस्टर्बेंस होने की वजह से, एक गैजेट का सर्किट ब्रेक होने की वजह से सारे के सारे गैजेट काम करना बंद कर देंगे. दैट इज द biggest disadvantage of series connection, कि if one of your electric appliance stop working, so whatever the remaining appliance which are in series connection with that appliance are also stop working. Okay dear students, so this is the disadvantages or demerits of series connection of resistor. So here we have learned in detail about the resistance of a system of resistors, in which we have learned about the resistors in series connection. We have learned about the resistor in series connection. We derived the formula for, because this is the important theory going to be come in 3 marks, in which we have to derive the formula for equivalent resistance
for the resistors in series connection. So whenever your resistors are in series connection, okay, what you have to keep in your mind, firstly your current is going to be same, whatever the path is available for the current to flow is going to be one only, and whatever the voltage is there, it is going to be drop at each and every resistor. Okay dear students, and this way we have derived the formula, which is the final equivalent resistance R is the sum of each and every resistance present in this circuit. Okay, then we have seen the characteristics followed by merits and demerits. Okay dear students, so this way you have to prepare this question. Okay, and it's the most important question of this chapter going to be asked in your board exam, so please prepare it very well. Now we will see you in our next lecture with new topic of this chapter. Till then, take care. Bye bye.